Namaste and welcome to RN Vibhasha Heart Journey. आज को वीडियो हो respiratory system day 2. Let's breathe in knowledge and exhale success. प्रणाली हमरो शरीर में ऑक्सीजन पुर्याउने र कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने महत्वपूर्ण प्रणाली हो. It includes nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs and alveoli. Inhalation को बेला diaphragm तल जानचा, lungs expand hunta. Exhalation मा diaphragm माथी आउटा और air बाहर जान. अब हेरों के ही सामान्य रोग हरू, asthma भने को के हो भने, airway संकुचित hunta और सांस फेरन गाहरो hunch. COPD भने को chronic bronchitis और emphysema को मिलन हो. अनि pneumonia भने को lungs मा infection भयर fluid जम्मा होने अवस्था हो. Q1, which is the main muscle used in breathing? A. Intercostal, B. Abdominal, C. Diaphragm, D. Sternocleidomastoid. सासफेन सबबंधा मुख्य मांसपेशी diaphragm हो जुन छाती र पेट को बीच में हुंच. Q2, what is the function of alveoli? A. Filter blood, B. Produce mucus, C. Gas exchange, D. Pump oxygen. Alveoli में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान हुंच. Q3, pneumonia primarily affects which part? A. Bronchi, B. Trachea, C. Lungs, D. Diaphragm. Pneumonia ma lungs ko alveoli ma fluid bharincha. Q4, which condition is chronic and progressive? A. Asthma, B. Tuberculosis, COPD, bronchitis. COPD दीर्घकालीन बिगड़ने जाने श्वास प्रश्वास समस्या हो. Q5, oxygen is transported in blood mostly by plasma, B. white blood cells, C. hemoglobin, D. platelets. Hemoglobin oxygen संग बंदी है शरीर भरी पुगाउच. Q1, which is the main muscle used in breathing? A. Intercostal muscle, B. Abdominal muscle, C. Diaphragm, D. Sternocleidomastoid diaphragm. दाम सांस फेरने मुख्य मांसपेशी हो जसले lungs को expansion और contraction गन सहयोग गर्च. Q, what is the function of alveoli in the lungs? A. Filter air, B. Produce surfactant, C. Gas exchange, D. Warm air. Alveoli ले oxygen और carbon dioxide बीच आदान प्रदान गर्च. Q3, pneumonia affects which part of the respiratory system? A. Bronchi, B. Alveoli, C. Trachea, D. Diaphragm. Pneumonia मा alveoli फिर फुस व fluid भरिंट जसले oxygen सोसन कठिन बनाउच. Q4, the respiratory center is located in which part of the brain? A. Cerebrum, B. Cerebellum, C. Medulla oblongata, D. Hypothalamus. Medulla oblongata सांस फैलने गति र गहराई नियंत्रण गर्च. Q5, what is the normal respiratory rate for an adult? A. 10 to 12 breaths per min, B. 12 to 20 breaths per min, C. to 30 breaths per min, 8 16 breaths per min. सामान्य वयस्क को सांस फेरने दर दर देखी 80%. यो थियो RN week 2 को day 2 video. Like, share and subscribe करना होला सक्स journey को लगी. Next video, endocrine system.